Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 20 and 21st of April. The session will be quite interesting students, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we will be talking about the VVDN's largest SMT and mechanical innovation park that will be coming up in Haryana. We will be talking about it. It was inaugurated by Ashwini Vaishnav ji. Next thing, we will be talking about skill development and sustainability in the India's real estate sector. And we have seen that past few years the Indian real estate sector has given tremendous return and the properties right now are at all-time high. Next thing, we will be talking about India's first prototype fast breeder reactor in Tamil Nadu to be operationalized by September 2026. We will be discussing then about the second Defense Literature Festival, that is Kalam and Kavach 2.0, that was recently organized. All these things and many more will be discussed in this video, students, so stay tuned with us till the end. Students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs, students. The first topic that we are discussing is that Ashwini Vaishnav, our union minister, has inaugurated VVDN's largest SMT and mechanical innovation park that will be coming up in Haryana. Right? So first thing first, if ministries ask, it is MEITY that has inaugurated this. SMT is your surface mount technology line, right? And mechanical innovation park that will be coming up in Haryana. The focus will be at innovation in research and development and in-house manufacturing, right? With this we can create job opportunities, correct? So innovation and research is important, development is important, as based on this only new use cases, new products, new services will be coming which will enhance manufacturing and will create job opportunities. Where it will be in Haryana, it will be at the Global Innovation Park that is located at Manesar. Also at IMT Kharkhoda, Asia's largest Maruti Suzuki plant is coming up, right? In IMT Kharkhoda. Then Global City, it is coming up in Gurgaon, right? Recently at these both locations, the Chief Minister of Haryana, Nayab Singh Saini, visited. Moving on, if we talk about this only, here you can see during this event, Ashwini Vaishnav has also showcased India's first fully designed artificial intelligence server by the name Adipoli, which is equipped with 8 GPUs and developed by VVDN Technologies. Correct? Take a note of this. So, Adipoli, what is this? It is the India's first artificial intelligence designed server. Then apart from this, remember, India's electronic manufacturing, as we see right now, has increased 5 times in the last 6 years. And also, we are seeing that a lot of job opportunities are also being created in this sector. Next is CREDAI. They have signed MOU with NSDC and QCI to enhance skill development and sustainability in Indian real estate. See, India's real estate has grown almost twice or thrice in the past few years, right? And now the rates are at all-time high, correct? Some locations are becoming very unaffordable for the general public also, but therefore in those areas the demand of real estate is also very high. So recently CREDI, that is your
Confederation of Real Estate Developers Association of India, they signed this MOU with NSDC, that is National Skill Development Corporation, and the Quality Council of India to strengthen the workforce skills and sustainability in India's construction and real estate sector. Right? With this partnership, you will be seeing various recognition of peer learning will be there, various skilling will be there in this sector, modern construction practices will be implemented. Also, the focus will be on developing the green buildings. Right? So sustainability will be a focus here. You will be seeing now there will be a huge demand of grade A office spaces in India, right? Any builder that is making these grade A office spaces will be highly in demand. Correct? If we talk about CREDAI, right, this is an apex body of the private real estate developers for advocating the industry norms for maintaining transparency. Where is the headquarter? It is in New Delhi. And who is the president here? Sheikh Haji Patel. Next is India's first prototype fast breeder reactor in Tamil Nadu to be operationalized by September 2026. What is this fast breeder reactor prototype? Right? This is basically a second stage of a nuclear program that is aiming to recycle the fuel to reduce the inventory of radioactive waste. Right? So what is this fast breeder reactor? This is basically consuming, in simple terms, it means it is consuming the waste that includes your nuclear waste and make something meaningful out of it, right? So that it can reduce the radioactive waste that is being produced. Correct? So it is India's first prototype fast breeder reactor, and where this product will be established, it will be established in Tamil Nadu, and it will be near the Kalappam in Chennai, Tamil Nadu, and it is expected that March 2026 it will be operationalized. Correct? Take a note of this. Next, one more thing, as we saw, there was an example for the nuclear waste, right? Also remember, Government of India is targeting to generate 100 gigawatt of electricity from nuclear resources in the coming period. Next is CENJOWS has organized the second Defense Literature Festival, that is Kalam and Kavach 2.0. So what is this CENJOWS? It is Center for Joint Warfare Studies. It comes under the headquarter Integrated Defense Staff under the Ministry of Defense in collaboration, and they have recently partnered with whom? Pentagon Press, and they have organized the second edition of the Defense Literature Festival, that is Kalam and Kavach 2.0, held at the Manekshaw Center in New Delhi. This is the location. Also, the theme of this 2025 edition was Securing India's Rise Through Defense Reforms. It focused on key areas such as defense technology, future warfare, defense manufacturing, and so on. This Kalam and Kavach, it is India's leading platform for security and geopolitical dialogue. Also, the event, it focuses on the discussions on the defense technology and future warfare. It includes artificial intelligence, because these are the technologies that is in demand right now. AI, quantum computing, cyber technologies, drones, your UAVs, right? Unmanned aerial vehicles, then space technology, then semiconductors. These are all things that are in high demand right now. Next is Indian Army. They have successfully concluded the Armex 24 high altitude expedition in Assam. Where it was held? In Assam. It is ARMEX, right? Armex, correct? And it is a 28-day high altitude adventure expedition. It will amplify the endurance, leadership, and operational readiness of Indian Army in the extreme conditions. Correct? A team of 20 military personnel was selected for physical fitness and maintain mental strength and your teamwork exercise. Correct? And this was held where? In Assam. Next is Bhagavad Gita and Natyastra added to UNESCO's Memory of the World Register. I repeat, recently Bhagavad Gita and Natyastra were added to the UNESCO's Memory of the World Register. This Memory of the World Register, basically it is an organization and a global initiative that was established to preserve the documents heritage of outstanding value. With this, the total number of inscriptions from India now stands at 14 in this UNESCO's World of Memory Register. Correct? And of total, there are 74 documentary heritage collections from 72 countries that were added. Correct? This year alone. This year alone that was added. Right? So, coming back, if we talk about UNESCO,
That is your United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Who is the Director General here? Audrey Azoulay. Where is headquartered? It is headquartered in Paris, France, and it was established in 1945. Next is 15th BRICS Agriculture Ministers meeting was recently held in Brazil. We know that the presidency of Brazil right now, this time it is with Brazil. Last time it was with Russia. And there, where was the meeting held? It was held in Kazan. Correct. So recently it was the 15th edition of BRICS Agriculture Ministers meeting was held in Brazil. This was the first agriculture ministers meeting, right? Or we can say this was the first agriculture ministers meeting, right, of the expanded BRICS that now has how many members? A total of 11 members, right? So this is the first time this meeting was held with 11 members, but as generally it was 15th BRICS meeting because there was earlier member also. Now there is news, right? This is not confirmed, but just have a news that maybe in future more countries will be joining BRICS and even their BRICS payment network that they are establishing. Correct. Next is India has granted 990,000 US dollar to Sierra Leone for empowering persons with disabilities. Almost $1 million, right? Close to $1 million was granted here. This initiative aims to empower differently able individuals in Sierra Leone by enhancing their livelihood opportunities and ensuring economic independence through rural-based cooperatives and skills training. Next, WHO member state finalized draft pandemic agreement to strengthen global health preparedness. I repeat, 194 member states of the Geneva, Switzerland-based World Health Organization finalized the draft text of a landmark pandemic agreement after 3 years. This agreement seeks to strengthen global coordination and preparedness to prevent and respond to future pandemics by addressing the gaps and challenges witnessed during COVID-19 pandemic. See, COVID-19 when it came, right, everything was in lockdown, right? We never knew that if such thing happens that how we have to react as a humanity as a whole, right? So we took lessons from it, and now a committee has also been established here that if similar thing happens in future, what are the guidelines that we need to follow, what are the procedures that we need to follow, and if something happens again, this is the way we will be reacting, right? Be it in for different sectors, it will be different for different sectors. Next is economy and business. Maharashtra has signed a memorandum of understanding with IBM India for AI-based administration transformation. I repeat, it is Government of Maharashtra and IBM India. They have signed here this MOU and they will be focusing on artificial intelligence. That how can we use artificial intelligence to bring better use cases for the general public, right? New models, new softwares that will enhance our life in different sector, right? This MOU will enhance the public service delivery specifically, right, by providing AI, cloud services, data analytics services, cybersecurity, and many more. Next, here you will be seeing multiple other initiative training programs will be there, MSME support, inclusive skilling will be there, and IBM India Private Limited here you can see headquartered in Bengaluru, Karnataka, and managing director is Sandeep Patel. Next is CRISIL projects 6.5% GDP growth for India in FY26. For FY26, it is 6.5%, right? Take a note of it. Next is Mahagenco. They have signed an MOU with Russia's Rosatom for development of India's first thorium-based SMR. What is SMR? Small modular reactor using thorium fuel, right? What is this? Right, it will be based in it is Mumbai, Maharashtra based Maharashtra State Power Generation Company Limited, right? They have signed this MOU with Moscow, Russia based State Atomic Energy Corporation Rosatom for joint development of this small reactor, and it will be thorium based, correct, and it will be developed with safety guidelines of India. Next is awards and recognition. 5 Indian Armed Forces personnel honored with McGregor Memorial Medal for 23 and 24. I repeat, General Anil Chauhan, the Chief of Defence Staff of India, facilitated 5 personnel of Indian Armed Forces with the McGregor Memorial Medal.
correct? It was at the United Service Institution of India, that is in New Delhi. And this is award basically based for their exceptional contribution for the military exploration, adventure activities, and various other missions. Who are the awardees here? You can see here, these are the awardees here. Next is Palestinian photographer Samar Abu Alof won the 2025 World Press of the World Press Photo of the Year. Correct, as you can see him in the picture, right? Very famous Palestinian photographer Samar Abu Alof, right? He has taken a picture here, right? And you can see here this picture has won him the World Press Photo of the Year. Correct, take a note of this. Who is he in this picture, right? This image is basically of a 9-year-old Muhammad Azor, and he is a boy from Gaza. Correct, he lost both his arms in an Israeli strike in the Gaza city that took place in March 2024, right? So this was his pick, and for which he was honored with this award. Next is appointment and resignation. Duro Mekot has been appointed as the new Prime Minister of Serbia. As you can see him in the picture, he is Duro Mekot, and he has been appointed as the new Prime Minister of Serbia. Next is ACC reshuffled secretariats across key ministries including finance, civil aviation, and culture. I repeat, ACC, that is your Appointments Committee of the Cabinet, approved a major bureaucratic reshuffle across key ministries, focusing on the Ministry of basically in the Ministry of Finance, with the appointment of the new secretaries here. Right? Key appointment here is Arvind Srivastav. First is Arvind Srivastav, an IAS officer of 1994 batch from Karnataka cadre, has been appointed as the Secretary of the Department of Revenue. Correct. Then next is second Vulmulan Vullanam, an IAS officer of 1992 batch, right, appointed as the Secretary of the Department of Education. Let me show you Arvind Srivastav, right, Vulmulan Vullanam, right, as the Secretary of the Department of Expenditure. Next is former Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey, appointed as the Vice President at AIIB, that is your Asian Infrastructure Investment Bank. Very important appointment, students. Take a note of this, right? He will be responsible for providing strategic leadership and overseeing 3 critical departments: the sectors, themes, finance solutions department, sustainability fiduciary solutions department, and the portfolio management department. Next is Mirabai Chanu, elected as the chairperson of IWLF's Athletes Commission, right? I repeat, Mirabai Chanu, right? So she has been appointed here as the chairperson of IWLF, that is your Indian Weightlifting Federation's Athletes Commission. Correct. Mirabai Chanu, she is from Manipur, and she is the second Indian weightlifter to win an Olympic medal after Karnam Malleshwari. Next is science and technology. Google has unveiled Ironwood chip to enhance the AI performance, right? And this is the 7th generation AI chip, right? And it has been named as Ironwood. Correct. It is designed to accelerate the AI applications. Correct. This will be focusing on computing that involves performance rapid calculations to generate the responses that are required to answer the queries that are generated by the general public to the artificial intelligence. Correct. So this will generally enhance the output there, right? It will be more faster and less energy will be consumed through this. Next is Rohit Sharma, appointed as the brand ambassador of T20 Mumbai League. Take a note of this, right? Rohit Sharma, very famous Indian cricketer, right? And the brand ambassador for the season 3 of the T20 Mumbai League that will start, correct, from 26th of May 2025. Next is important day, students. World Liver Day observed on 19th of April, and it is to promote the actions toward the prevention and management of liver related disease. The theme here will be food is medicine, right? It will emphasize the role of nutrition in maintaining liver health. And World Liver Day first launched in India in 2019. Next is Maharashtra has declared DPS Flamingo Lake as the conservation reserve, right? I repeat, recently Maharashtra, correct, their Maharashtra's State Wildlife Board, correct, they have recently approved the declaration of this 30-acre Delhi Public School Flamingo Lake in Navi Mumbai, Maharashtra as a conservation reserve, right? Take a note of this. Like, if we are, and where is this? In Maharashtra, Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis.
So that's all for the day, students. Next, let's move to the revision part that will be very beneficial for you all. And then we'll proceed to the homework section. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stone of various development projects, including 1675 flats for residents of Jhuggi Jhopdi cluster and World Trade Center. PM Modi laid the foundation stone of Veer Savarkar College. So two things. First is 1675 flats for the Jhuggi Jhopdi cluster, and second is the WTC, World Trade Center. And the World Trade and basically these are the flats for these Jhuggi Jhopdis and the World Trade Center. And next thing is PM Narendra Modi laid the foundation stone of Veer Savarkar College where. So he laid this foundation stone at New Delhi, and these Jhuggi Jhopdi workers will also be getting these flats in Delhi itself. Next, which IIT has recently partnered with the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to launch Project Vistar to revolutionize the agriculture extension system through digitalization for farmers across India. So name that Indian Institute of Technology. It is IIT Madras. This project will help the farmers and the stakeholders in agriculture to access high quality advisory services that are related to crop production, marketing, value addition, supply chain management and government schemes. Next, in January, Gujarat cabinet led by Chief Minister Bhupendra Patel approved the division of Banastha district, creating 34 district is called dash. It is Vav Tharad. This is the 34th district now. So there are 34 districts now. Next, which of the following are correct with respect to the ONDC led by DPIIT that aims at revolutionizing the digital commerce in India? If we look at the options here, which of the following are right? So among the options here, only C option is correct. B is wrong. A and B both are wrong. A is saying ONDC was incorporated as a non-profit Section 8 company in December 2021 with authorized capital of 1000 crore rupees. So is it correct? So remember, this ONDC was established as a non-profit company under the Section 8 with an authorized capital of not 1000 crore rupees but 500 crore rupees. B, that now A option is right. B saying that investors include National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, HDFC, BSE, Small Industries Bank of India, that is SIDBI, ICICI Bank and World Bank. Are they correct? So remember here the key investors are India's largest public sector bank, that includes your SBI, NABARD, HDFC, BSE, SIDBI, NSDL, right? Not ICICI, yes, ICICI Bank, not World Bank, but your NSDL. Now option B is also right. Next is EPFO recently completed the nationwide implementation of CPPS under the Employees Pension Scheme of 1995 to improve the ease of living for pensioners. What does C stands for in CPPS? CPPS is your centralized pension payment system. So C stands for centralized. This initiative, it will allow the pensioners to access their pensions easily from any bank account branch nationwide. Next, India and Maldives have recently signed a memorandum of understanding for execution of the third phase of what in Maldives? It is for the third phase of the high impact community development projects. Next, Ministry of Textiles recently extended the compliance deadline of the Medical Textiles 2024 until dash to address the challenges faced by small and medium enterprises. So Ministry of Textiles, they have extended this compliance deadline to what? It has been extended to 1st of April 2025. Next, which phase of the National Educational Alliance for Technology, that is NEAT, was recently launched by All India Council for Technical Education in Vasant Kunj in New Delhi. So this was the fourth phase of the National Educational Alliance for Technology. Next, name the new specialized visa categories that were recently introduced by Ministry of Home Affairs to facilitate foreign students pursuing higher education at Indian academic institution. So name that new specialized visa categories. It is E-student visa and E-students X visa. This E-student visa eligible for foreign students registered on the SII portal, while the E-student X visa is for the dependents of the E-student visa holders. And this is valid up to 5 years. Next, on January 4th, CSIR's Armed National Physical Laboratory celebrated their which Foundation Day? It was the 79th Foundation Day in New Delhi. Next, which state has recently inaugurated the Adivasi Mela 25 and launched Shahid Madho Singh Hath Kharcha scheme? I repeat, Shahid Madho Singh Hath Kharcha scheme to support the tribal
students. So this scheme was launched by Odisha state, and this scheme was launched with a budget of 156 crore rupees. The aim of the scheme is to support the tribal students and honor the 9 tribal talents and 10 tribal farmers for their outstanding contribution during the event also. Right, under this scheme, the tribal students who have passed class 8 and class 9th, correct, or basically who has passed the class 8 and will be joining class 9th or class 10, they will be receiving a one-time incentive of 5,000 rupees. Next, which state has recently become the first state in India to introduce an innovative plan that connects the ecosystem services of its forest with the green GDP? It is your Chhattisgarh state. It became the first state in India to introduce this innovative initiative, right? And it is directly linked with the environmental contributions of the forest like clean air, water conservation, biodiversity, and many more. Next, which country and India has recently held their first security dialogue in Delhi to enhance the bilateral cooperation? It is Malaysia. Next, which company has recently delivered India's first driverless made in India train set to Bengaluru Metro Rail Corporation Limited? So it is Titagarh Rail Systems Limited, formerly your Titagarh Wagons Limited, made a significant stride in India's urban mobility sector by delivering India's first driverless made in India transit set to Bengaluru Metro Rail Corporation Limited. Next, in January, Chief Minister of Karnataka Siddaramaiah has launched the health insurance scheme by the name Karnataka State Road Transportation Corporation Arogya. What this will do is this will provide treatment, right, or this will provide cashless medical treatment to the KSRTC's employees and their families. So basically it's a health insurance scheme. Next, what is the coverage amount per person under the upgraded cashless treatment scheme for road accident victims recently announced by Union Minister Nitin Jairam Gadkari? So it is 1.5 lakh rupees. Next, which organization has recently launched Kisan Smriddhi portal to create a digital Vyapar network, that is Divyan, to promote efficient agriculture marketing? So, which organization launched this Divyan or launched this Kisan Smriddhi portal to create Divyan? So, it was launched by ICAR, Indian Council of Agriculture Research. Correct? Next is which edition of National Program for Oceanic, or I repeat, which edition of the National Program for Organic Production was recently launched by Union Minister Piyush Goyal ji at the National Agriculture Science Complex in Pusa in New Delhi? So, which edition of this National Program for Organic Production? It is the 8th edition here, right? Also, TraceNet 2.0 was also unveiled by him. This TraceNet, it is the upgraded online organic traceability system for the seamless operations, and it improved the tools for the regulatory oversight. Next, also one thing remember here students, all these things in the organic sector is done by India in order to reach a target of $2 billion in organic export by 2030. Next, where did the Union Minister of Coal and Mines G. Kishan Reddy recently inaugurated the 5G use case test lab of Central Mine Planning and Design Institute Limited? It is in Jharkhand. Next, Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh has recently launched the Dash portal. So he launched the Indian Biological Data Center portal, correct, to provide access to 10,000 whole genome samples for researchers globally at the Genome India Data Conclave in New Delhi. Next, in January, India became a member of which United Nations organization? So India became a member of United Nations Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics. Next, which tunnel was recently inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Sonmarg, located in the Ganderbal district of Jammu and Kashmir? So which tunnel was recently inaugurated by Prime Minister? It is your Zedmore tunnel that was inaugurated by Prime Minister in the Ganderbal district of Jammu and Kashmir. Next, under which amendment the Telecom Regulatory Authority of India, that is TRAI, proposes the rationalization of broadband tariffs for public data offices under PM Wani scheme in January 2025. So under which amendment? It is the 71st amendment of TRAI. Next, in January, Union Minister Piyush Goyal has launched National Turmeric Board to boost the turmeric industry in India. Who is the first chairperson of the National Turmeric Board? So who is the first chairperson? Pali Ganga Reddy.
Correct. And he has been appointed as the first chairperson of the National Turmeric. Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing about topic sports for January month. Session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. Let's start students. Which team has won the title of Pro Kabaddi League season 11 by defeating Patna Pirates in the final that was held at Shri Shiv Chhatrapati Sports Complex in Balwadi, Pune, Maharashtra in December 2024. So name that team, that is Haryana Steelers. This marked their first ever Pro Kabaddi League title for Haryana Steelers, and they have won a prize of 3 crore rupees, and this was the season 11 of the Pro Kabaddi League. Next, who won the inaugural King Cup International Badminton Open 24 title after defeating China's Hu Jian in the final match? Right, who won the inaugural King Cup title International Badminton Open? It was won by Anders Antonsen. Right, Ender Antonsen, he is of Denmark. Next, who was appointed as a board member in the new interim Asian boxing body formed after Asia inclusion in the world boxing structure in December 24. So, who was appointed as the board member? Ajay Singh. Next, which state has recently claimed the 78th Santosh Trophy title by defeating Kerala in Hyderabad, Telangana? This Santosh Trophy, this is related to which sport? It is related to football. First question. Second, which state has won the 78th Santosh Trophy title? It was won by West Bengal. The final was held where? It was held in Hyderabad, Telangana, and this is West Bengal's 33rd time winning this Santosh Trophy. Next, name the mascots unveiled by the Kho Kho Federation of India for the first ever Kho Kho World Cup scheduled from 13th to 19th of January at Indira Gandhi Indoor Stadium of New Delhi. So name that mascot. It is Tejas and Tara. The tournament will feature 21 men's and 20 women's teams from 24 countries, and the mascot Tejas and Tara are dynamic gazelles that represent the spirit of the tournament. And this was the first ever Kho Kho World Cup scheduled from 13th to 19th of January by Sports Authority of India, will be held at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. Next, and one more thing, there was a green trophy for women and a blue trophy for men. Next, which of the following points are correct with respect to the test series to win the Border Gavaskar Trophy held between India and Australia in Sydney, Australia? If we look at the options, option A and C are right, B is wrong. B is saying Ravi Chandra Ashwin was awarded with the Player of the Series title as he emerged as the highest wicket taker of the tournament with 22 wickets. Is it correct? So Ravi Chandra Ashwin was awarded here. No, Ravi Chandra Ashwin was not awarded, but who was awarded with this trophy? Jasprit Bumrah. Now option B is also right. Next, cricketer Martin Guptill, who recently announced his retirement from international cricket, represents which country? He represents New Zealand. Next, which of the following cricketers from Bangladesh has recently announced retirement from all the forms of international cricket? So Tamim Iqbal Khan has announced retirement from international cricket. Next, which football club recently defeated Real Madrid to win the 41st edition of the Spanish Super Cup final held in King Abdullah Sports Stadium in Jeddah, Saudi Arabia? So it is Barcelona, right? They have defeated Real Madrid to win the 14th edition of the Spanish Super Cup title. Take a note of this. This is important. And Barcelona, this is 15th time that they have won this title. Next, which of the following are not correct with respect to India Open Super 750 badminton tournament held from 14th to 19th of January? If we look at the options, option A is only right, B and C are wrong. I correct students, it is asked which is of the following is not correct. So A is not correct, B and C are correct. A is saying that Hong Kong's Lee Chuk Yin has won the men's single title in the finals. Is it correct? No. So Victor Axelsen of Denmark has recently won the men's single title here. Next, which of the following are correct with respect to the Kho Kho World Cup held from 13th to 19th of January in New Delhi? If we look at the options, the correct one, it is A and C. B is wrong. B is saying that Indian women's team has won the Kho Kho World Cup title by defeating Sri Lanka in the finals. Is it correct? So no, remember Indians men team here, they have defeated Sri Lanka in the finals, right? And Indian women's has won their title by defeating Bangladesh in the finals. Yes, correct. Now all the options are rightly mentioned. Next,
The International Tennis Federation recently announced Dash and Iga Natalia Swiatek as men's and women's ITF world champion for their exceptional performance. So who was announced as the women's ITF world champion? Iga Swiatek. And for the men's category, Jannik Sinner. Jannik Sinner, correct, he is from Italy. Next, which cricket team has recently won the 5th title of Vijay Hazare Trophy by defeating Vidarbha cricket team in the finals held in Vadodara, Gujarat? So it is Karnataka's cricket team that has won the 5th title of the Vijay Hazare Trophy. Next, who is the international event ambassador for the 20th edition of Mumbai Marathon 2025 recently held in Mumbai, Maharashtra? So Mohammad Muqtabar Jama Farah, right? He was the international event ambassador for the 20th edition of the Mumbai Marathon held in Mumbai, Maharashtra. Next, name the international Indian Grandmaster who recently won the 9th Johor International Open Chess Tournament in January held in Malaysia. So Inian Pennyvislam, right? He is the Indian Grandmaster who has won the 9th edition of the Johor International Open Chess Tournament. Next, identify the team that recently won the inaugural Women's Hockey India League title by defeating GSW Surma Hockey Club of Punjab and Haryana held in Ranchi. So, identify the team. It is your which team? It is your Odisha Warriors. So, students, next is our homework section. First, tell me recently who has been appointed as the chairperson of IWLF Athletes Commission. We just discussed this today. Second question, who has been appointed as the Chief Executive Officer of Oman India Joint Investment Fund? Third question, tell me recently who has received the knighthood for his services to cricket. Name that person and from which country he belongs to. Then, fourth question, who has bagged the ICC Men's Player of the Month Award for March 2025? Fifth question, recently tell me DRDO, they have released a long range glide bomb. What is the name of that bomb? And it was tested from which aircraft? Tell me that also. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स. अश्विनी वैष्णव इन्होंने इनॉग्रेट किया VVDN's लार्जेस्ट SMT एंड मैकेनिकल इनोवेशन पार्क. कहाँ पर? हरियाणा में. हरियाणा में भी कहाँ पर? ये ग्लोबल इनोवेशन पार्क में रहेगा जो कि मानेसर में है. राइट. इससे होगा क्या? इससे फोकस किया जाएगा कि कैसे हम जो इनोवेशन है उसके ज़रिए, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए हम नए यूज़ केसेस सेटअप कर सकें, हम नए प्रोडक्ट्स सर्विसेज मार्केट में ला सकें एंड उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके हम मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दे सकें. राइट. एंड इससे क्या होगा? इंडिया में ही कंजप्शन नहीं, अगर हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. करेक्ट. तो सिमिलरली अभी इंडिया के द्वारा या फिर हम बोलें इसी इवेंट के दौरान अश्विनी वैष्णव जी ने इंडिया का पहला फुल्ली डिजाइंड AI सर्वर को लॉन्च किया जिसका नाम है आदिपुली. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. इंडिया का पहला AI सर्वर, इंडियाज फर्स्ट AI सर्वर क्या है? आदिपुली. करेक्ट. 8 GPUs एंड VVDN टेक्नोलॉजीज के द्वारा इसको बनाया गया है.
यहीं पे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता हुआ हमें दिख रहा है, राइट। एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, राइट, पिछले 6 सालों में 5 गुना बढ़ गई है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये फर्दर बढ़ती जाएगी, 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा आगे जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्रेडाई, CREDAI। ये क्या है? ये है आपका क्रेडाई, एक ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन्होंने MOU साइन किया NSDC एंड QCI के साथ ताकि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा सके इन रियल एस्टेट सेक्टर, राइट। जो ब्रोकर्स हो जाते हैं, राइट, जो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, राइट, जो यहाँ पे बिल्डर्स हैं, राइट, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको क्या कंस्ट्रक्शन उस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर तरीके, वे ऑफ डूइंग काम, राइट, ये वहाँ पे उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, इसके लिए यहाँ पे MOU साइन किया गया। इससे होगा क्या? जो फाइनल प्रोडक्ट है, एक तो वो बेटर होता हुआ हमें दिखेगा, दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हुई दिखेंगी, क्योंकि स्किल्ड यहाँ पे लेबर्स होंगे तो उनको बेटर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, राइट। प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर होकर सामने आएगा, पे अच्छी होगी, राइट। तो ये MOU यहाँ पे हमें साइन होता हुआ देखा। NSDC क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड QCI क्या है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इवन आप देखे होंगे स्टूडेंट्स, पिछले कुछ सालों में, राइट, ऑलमोस्ट 4-5 सालों में आपने देखा होगा जो रियल एस्टेट में है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है। जो फ्लैट के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, रेजिडेंशियल काफ़ी कॉस्टली होता हुआ हमें देखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में एस्टैब्लिश किया जाएगा, टू बी ऑपरेशनलाइज बाय सितंबर 2026। ये आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी अपने साथ वेस्ट प्रोड्यूस करती है, राइट। एनर्जी तो आती है, राइट, न्यूक्लियर प्रोडक्ट से, तो उसके साथ वेस्ट भी जनरेट होता है। अब इस वेस्ट, ये हार्मफुल है, तो इस वेस्ट को ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है? लेस हार्मफुल बनाता है। कैसे? इसमें से प्रोडक्ट्स को, केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हमें जिसकी ज़रूरत होती है, और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को साइड में कर देते हैं, वो कम हार्मफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स को ट्रीट करने के लिए आप कई सारे प्लांट सेटअप करेंगे जो पानी में से केमिकल्स हैं उनको निकाल दे, एब्जॉर्ब कर लें, ताकि उस पानी को क्लीन किया जा सके। सिमिलरली आपके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रहेगा। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया गया है, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, CENGOW है, जो कि है सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज अंडर द हेडक्वार्टर्ड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कोलैबोरेशन विद पेंटागन प्रेस, राइट। इन्होंने सेकेंड एडिशन ऑफ डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच 2.0 को इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया। कहाँ पर? मानेकशा सेंटर में, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। इसकी थीम क्या रहेगी? सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स, राइट। ये आपके थीम है 2025 में एडिशन की। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन आर्मी, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया RMAX 24 हाई ऑल्टीट्यूड एक्सपीडिशन को, जो कि असम में हुआ था। डायरेक्टली क्वेश्चन याद रखना, कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं भगवद गीता एंड नत्यस्त्रा, राइट। इनको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है। ये होता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर से रिलेटेड, उनको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, राइट, ताकि फ्यूचर में लोग मतलब एक पूरा सेफली आगे हम मेंटेन रख सकें, राइट। तो हम कह सकते हैं महाभारता, राइट, इनको ऐड किया गया टू द वर्ल्ड ऑफ या फिर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। नेक्स्ट आ जाते हैं, 15th एडिशन ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पर हुई? ब्राज़ील में। ब्राज़ील के पास अभी प्रेसिडेंसी है, करेक्ट। इससे पहले रशिया के पास थी। उसमें कहाँ पर हुआ था? कजान डिक्लेरेशन हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर इंडिया ने ग्रांट किया 990,000 सियरा लियोनी को, राइट। बेसिकली ऑलमोस्ट $1 मिलियन कह सकते हैं, सियरा लियोनी को यहाँ पे ग्रांट दिया गया ताकि PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पे एम्पावर किया जा सके। किसी को इक्विपमेंट चाहिए उनकी वो हेल्प की जा सके, राइट। किसी को कोई स्किल सिखानी है ताकि वो एम्प्लॉयबल हो सके, वो उसमें हेल्प की जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, WHO मेंबर स्टेट्स फाइनलाइज ड्राफ्ट पैंडेमिक अग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल हेल्थ प्रिपेयरनेस। देखो, कोविड-19 आया तब हम प्रिपेयर नहीं थे कि ऐसी सिचुएशन कभी वर्ल्ड में हमें देखने को मिलेगी। अगर आती है तो हमें उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करनी चाहिए, क्या गाइडलाइंस रहती हैं, तो वो पहले इस्टेब्लिश नहीं थी, राइट। तो अब पैंडेमिक आने के बाद लॉकडाउन लग गया, एकदम सब मतलब स्टॉप हो गया था। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की गई कि हमें पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में हमें फर्दर में कैसे रिएक्ट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MOU साइन किया IBM इंडिया के साथ ताकि AI बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके स्टेट में, राइट। डिजिटाइजेशन हो सके, क्लाउड सर्विसेज, डाटा एनालिटिक्स सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, AI, इन चीज़ों का कंपनीज के द्वारा यूज़ किया जाए ताकि बेटर सर्विसेज यहाँ पे मास तक हम पहुँचा सकें, करेक्ट। इसी के अलावा 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
इन एआई इस्टेब्लिश करने की बात की गई मुंबई, नागपुर एंड पुणे में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये आप यहाँ पे इनिशिएटिव देख सकते हैं जो यहाँ पे लॉन्च किए गए ताकि स्किलिंग के ऊपर भी काम किया जा सके। एंड IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका, MD रहेंगे संदीप पटेल। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्रिसिल ने प्रोजेक्ट किया 6.5% का GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन FY26, तो 6.5% GDP ग्रोथ रेट। नेक्स्ट आ जाते हैं महाजन को, राइट, ये क्या है, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। इन्होंने MOU साइन किया रशिया के प्रोसाटॉम के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का पहला थोरियम बेस्ड SMR क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इसमें थोरियम फ्यूल को यूज़ किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यहाँ पे इससे की जाएगी। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इसके बाद अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे मैकग्रेगर मेमोरियल अवार्ड की फॉर 2023-24 यहाँ पे दिए गए 5 पर्सनल्स को, 5 इंडियन आर्म फोर्स पर्सनल्स को यहाँ पे ऑनर किया गया है, राइट। आप इसको देख सकते हैं, ये वो यहाँ पे ऑनर्स रहे, ये ऑनरी रहेंगे, राइट। एंड इंपॉर्टेंट है, टेक अ नोट ऑफ दिस, पहली चीज़। फिर इसी के अलावा बुक लॉन्च हमें देखने को मिला ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, राइट। ड्यूरिंग दिस जनरल अनिल चौहान इन्होंने ये ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव बुक को लॉन्च किया, ऑथर बाय लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, रिटायर्ड फ्रॉम द चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। करेक्ट। चलिए फिर अगर हम मैकग्रेगर मेमोरियल अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड बेसिकली मिलिट्री एक्सप्लोरेशंस, राइट, एंड जो एक्सपेंडिचर एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो जाते हैं, बेसिकली आपके मिलिट्री एक्सपेडिशंस होते हैं, मिशंस होते हैं, राइट, उनकी ब्रेवरी के लिए उनको यहाँ पे ऑनर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर समल अबू उल्लौफ, राइट। इन्होंने वर्ल्ड प्रेस ऑफ फोटो ऑफ द ईयर को जीता है, राइट, 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, राइट। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, एक फोटो है इस बच्चे के, दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्म्स नहीं है, करेक्ट। ये एक फोटो है ऑफ अ बॉय फ्रॉम गाजा, राइट। एंड यहाँ पे इजरायली स्ट्राइक हमें देखने को मिली थी मार्च 2024 में, जिसके दौरान इस बच्चे ने अपने दोनों हाथों को गंवा दिया था, राइट। ये है 9 साल के मोहम्मद अजूर। तो इनकी फोटोग्राफ के लिए इनको यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, इन्होंने इसको जीता। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। दूरो मकौत, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ACC ने रिशफल किया सेक्रेटरीज को अक्रॉस की मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग फाइनेंस, सिविल एविएशन एंड कल्चर। 2 अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे, अरविंद श्रीवास्तव ये IAS ऑफिसर है एंड इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। एंड अगर हम बात करें वुलंको, ये IAS ऑफिसर है 1992 बैच के, इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट और भी अपॉइंटमेंट्स हैं, राइट, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अनुराधा ठाकुर की, ये सेक्रेटरी बनी है DEA में। देन के मौसा चलाए, राइट, ये सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज में, एंड मैनी अदर्स। नेक्स्ट फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, इनको अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट एट AIIB, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पर। नेक्स्ट मीराबाई चानू, ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, राइट, ये वेट लिफ्टर है एंड इनको इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन। इनकी एथलीट्स कमीशन के लिए यहाँ पे इनको चेयरपर्सन यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे स्टूडेंट्स। गूगल ने अनवेल किया आयरन वुड चिप को, ये AI परफॉर्मेंस को बेटर करेगी। ये आपकी 7th जनरेशन चिप है। इससे होगा क्या कि इसमें जो आपकी कोडिंग की जाएगी एंड जिस तरीके का मटेरियल है वो बेटर परफॉर्मेंस को सपोर्ट कर सकता है। मतलब जैसे आप अगर कहीं पे भी ChatGPT पे या फिर डीप सीक पे या LLM पे या किसी भी LLM पे जाके आप वहाँ पे ट्रेंड LLM पे अपने एजेंट से व्हाट्सएप पे, ग्रॉक पे कुछ भी टाइप करते हैं तो वो क्या करता है, वो सोचता है पहले, राइट, दैट इज कलेक्टिंग डाटा। तो उस डाटा को कलेक्शन के लिए ना वो मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाते हैं, वो मल्टीपल अलग अलग सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करता है। उस केस में वो स्पीड मैटर करती है कि वो कैसे कलेक्ट कर रहा है, कितनी तेज़ी से कलेक्ट कर रहा है, क्या उसकी कोडिंग लिखी गई है, कितने बेटर सॉफ्टवेयर है, राइट। तो ये जो चिप है उस प्रोसेस को उसको सपोर्ट करती है, उसको और ज़्यादा तेज़ी से सपोर्ट करती है, मतलब आप उस पर और ज़्यादा हैवी टास्क कर सकते हैं। इसका नाम रखा गया है आयरनवुड, गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर रोहित शर्मा, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 मुंबई लीग। ये भी मई में स्टार्ट होने वाली है T20 मुंबई लीग, राइट। इसका 3rd सीजन रहेगा, 26 में से ये इस्टेब्लिश हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं, लीवर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड इससे रिलेटेड डिजीज जो होती हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी एक थीम याद रखेंगे, थीम है फूड इज मेडिसिन, फूड इज मेडिसिन, राइट। और वर्ल्ड लीवर डे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2019 में ऑब्जर्व किया गया था पहली बार।
नेक्स्ट आ जाते हैं, महाराष्ट्र स्टेट ने डिक्लेयर किया डीपीएस फ्लेमिंगो लेक एज द कंजर्वेशन रिजर्व, राइट। ये कहाँ पर है डीपीएस फ्लेमिंगो लेक? ये आपके हमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। 30 एकड़ का ये एरिया है एंड इसको कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, पहले फिर चलेंगे होमवर्क सेक्शन पर। It has recently claimed the 78th संतोष ट्रॉफी टाइटल by defeating केरला in हैदराबाद, तेलंगाना। तो किस स्टेट ने अभी क्लेम किया 78 संतोष ट्रॉफी को, 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी? तो वेस्ट बंगाल के द्वारा इसको जीता गया एंड ये 33rd टाइम है कि संतोष ट्रॉफी को वेस्ट बंगाल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, नेम दैट मैस्कॉट अनवेल्ड बाय खो खो फेडरेशन। अभी हमने देखा था खो खो वर्ल्ड कप हुआ था पहली बार इंडिया में 13 से 19 फरवरी के बीच में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे जो लोगो लॉन्च, मैस्कॉट लॉन्च किए गए थे वो था तेजस एंड तारा, राइट। एंड यहीं पे ब्लू ट्रॉफी थी मेंस के लिए एंड ग्रीन ट्रॉफी थी आपकी वीमेंस के लिए। एक और चीज़ यहीं पे, ये जो इवेंट था ना, दोनों मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में इंडिया की टीम ने यहाँ पे इसको जीता, खो खो वर्ल्ड कप को। Next, which of the following are correct with respect to the test series to win the Border Gavaskar Trophy held between India and Australia in January in Sydney, Australia? तो कौन सा करेक्ट यहाँ पे रहेगा इनमें से, ABC में से? तो ऑप्शन A एंड C सही है, B गलत है। कह रहे हैं कि रविचंद्र अश्विन, इनको अवार्ड किया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज टाइटल एज ही emerged as the highest wicket taker of the tournament with 32 wickets। तो नहीं, रविचंद्र अश्विन नहीं, वो रहेंगे कौन? वो है जसप्रीत बुमराह। अब तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्रिकेटर मार्टिन गुप्तिल, इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये किस कंट्री से रिप्रेजेंट करते हैं? ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूजीलैंड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स फ्रॉम बांग्लादेश हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो तमीम इकबाल खान, इन्होंने सभी इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्म्स हैं, ODI, टेस्ट क्रिकेट, वनडे एंड T20, सबसे रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच फुटबॉल क्लब रिसेंटली डिफीटेड रियल मैड्रिड टू विन द 41वां एडिशन ऑफ द स्पेनिश सुपर कप। तो और ये हुआ कहाँ पर था? किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो कि जद्दा है, सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ पे बार्सिलोना ने जीत लिया है 41st एडिशन ऑफ स्पेनिश सुपर कप, राइट। इन्होंने रियल मैड्रिड को फाइनल में हराया। ये दोनों टॉप की कम स्पोर्ट्स क्लब है, फुटबॉल क्लब्स है, राइट। एंड बार्सिलोना ने इसको 15वीं बार जीता है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट रिस्पेक्ट टू इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था? तो इसमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए गलत है, B एंड C दोनों सही हैं। ए कह रहा है कि हांगकांग के ली शुक्योन ने मैन सिंगल टाइटल जीता, तो नहीं, इंडिया के डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा यहाँ पे मैन सिंगल टाइटल जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू खो खो वर्ल्ड कप, जो कि 13 से 19 जनवरी के बीच में हुआ इन न्यू दिल्ली। इफ विल लुक एट द ऑप्शन, हमने देखा था कि पहला एडिशन था ये। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। ए कह रहा है कि इंडियन वीमेंस टीम ने खो खो वर्ल्ड कप जीता बाय डिफीटिंग श्रीलंका इन द फाइनल्स। तो वीमेन टीम ने तो जीता इसको, लेकिन मैन टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हरा के जीता था, वीमेन टीम ने बांग्लादेश को फाइनल में हरा के जीता था। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन रिसेंटली अनाउंस्ड जेनिक सिनर एज द मेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन एंड ईगा नटालिया स्वातिक एज द वीमेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन, राइट। तो दोनों का याद रखेंगे, मेंस एंड वीमेन का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस क्रिकेटर टीम ने रिसेंटली जीता 5th टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी बाय डिफीटिंग विदर्भा क्रिकेट टीम इन द फाइनल, जो कि वडोदरा गुजरात में हुई थी। तो किस क्रिकेट टीम ने यहाँ पे 5th टाइटल जीता विजय हजारे ट्रॉफी का? वो कौन सी टीम रहेगी? वो है कर्नाटका, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने इनॉग्रेट किया एंड ले किए वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग 1675 फ्लैट्स फॉर झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। एंड फिर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ले किया एक फाउंडेशन स्टोन फॉर वीर सावरकर कॉलेज, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो ये जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स को जो फ्लैट मिलेंगे, ये भी आपके कहाँ रहेंगे? वजीरपुर दिल्ली में। जस्ट रिमेंबर, दिल्ली में रहेंगे। नेक्स्ट, which Indian Institute of Technology has recently partnered with Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, ताकि प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च किया जा सके, जिससे हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं एंड फार्मर्स तक डिजिटाइजेशन को पहुंचा सकते हैं। तो वो कौन सा IIT रहेगा? वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जनवरी गुजरात कैबिनेट लेड बाय चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने अप्रूव किया डिवीजन ऑफ बनस्था डिस्ट्रिक्ट क्रिएटिंग 34वें डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड, क्या नाम रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट का? वाव थराट। ये 34वें डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ONDC लेड बाय DPIIT, जिसका एम रहेगा कि हम डिजिटल कॉमर्स को रेवोल्यूशनाइज कर सकें इंडिया में। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें से? तो आपका ऑप्शन सी सिर्फ सही है, बी गलत, ए गलत है, बी गलत है। ए कह रहा है कि ONDC इसको नॉन प्रॉफिट बनाया गया था सेक्शन 8 कंपनी अंडर ऑन 31 दिसंबर 2021 विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1000 करोड़ रुपए। तो नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 500 करोड़ की कैपिटल से। अब ऑप्शन ए सही है। बी कह रहे हैं इन्वेस्टर्स यहाँ पे कौन कौन से रहेंगे? नाबार्ड, SBI, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सिडबी, ICICI बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। नहीं, तो वर्ल्ड बैंक नहीं रहेगा, NSDL रहेगा वर्ल्ड बैंक की जगह। नेक्स्ट, EPFO, राइट, इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया एक नेशन वाइड कैंपेन टू इम्प्लीमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CPPS अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम टू इम्प्रूव ईज ऑफ लिविंग फॉर पेंशनर्स। यहाँ पे जो CPPS है, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे इनडायरेक्टली। तो CPPS क्या है? सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। तो सी क्या है? सेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया एंड मालदीव्स। इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक MOU फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द थर्ड फेज ऑफ व्हाट? इट इज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द थर्ड फेज ऑफ हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कहाँ रहेंगे? मालदीव्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने रिसेंटली एक्सटेंड किया द कंप्लायंस डेडलाइन ऑफ द मेडिकल टेक्सटाइल्स 24 अंटिल डैश, जो एड्रेस करेगा चैलेंजेस फेस्ड बाय द MSMEs। तो 1 अप्रैल 2025 तक इसको एक्सटेंशन मिल गया है। नेक्स्ट, किस फेज में ऑफ द नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इन वसंत कुंज दिल्ली। तो 4th वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया गया था इसका। नेक्स्ट, नेम द स्पेशलाइज्ड वीजा कैटेगरी, जिसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा टू फैसिलिटेट फॉरेन स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन एट इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो स्पेशलाइज्ड वीजा कैटेगरीज का नाम बताओ। तो 2 लॉन्च की गई थी ये स्पेशलाइज्ड वीजा कैटेगरीज, एक है ई स्टूडेंट वीजा और दूसरा आ जाता है ई स्टूडेंट वीजा एक्स। ई स्टूडेंट वीजा ये आपके 5 साल के लिए रहेंगे, पहली चीज ये याद रखेंगे। एंड ई स्टूडेंट वीजा रहेगा कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपना हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं इंडिया की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनको मिलेगा ई स्टूडेंट वीजा। एंड उनके डिपेंडेंट्स को ई स्टूडेंट्स एक्स वीजा यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट, ऑन जनवरी CSIR का आम नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना कौन सा फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली? तो 79 फाउंडेशन डे इनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया आदिवासी मेला 2025 को एंड लॉन्च किया शहीद माधो सिंह हत्था खर्चा स्कीम टू सपोर्ट द ट्राइबल स्टूडेंट्स? तो ये ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गई स्कीम है। इसके अंडर आप देखेंगे 5000 रुपये पर महीना मिलेगा, वन टाइम पेमेंट रहेगी ट्राइबल बच्चों को, जो कि 8वीं क्लास से 9th एंड 10th में यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली, वो पहली स्टेट बन गई इन इंडिया जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक इनोवेटिव प्लान जो कनेक्ट करता है इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ द फॉरेस्ट विद ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया, जिससे हम मॉनिटर करेंगे कि हमारी जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, राइट, एनवायरमेंट जो है, फॉरेस्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी यहाँ पे उसको भी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने एंड इंडिया ने रिसेंटली हेल्ड की अपनी पहली सिक्योरिटी डायलॉग मीटिंग न्यू दिल्ली में ताकि बायलैटरल कॉपरेशन बढ़ाया जा सके? तो इंडिया एंड मलेशिया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली डिलीवर किया इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेड इन इंडिया ट्रेन सेट टू बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन? तो किसने डिलीवर किया? यह है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जनवरी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धारामैया जी इन्होंने लॉन्च किया एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा उनकी, एंड इसका नाम रहेगा कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आरोग्य स्कीम। करेक्ट, ये कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने का काम करेगा इनके एम्प्लॉयज़ एंड इनकी फैमिलीज को। 1.5 लाख पीपल को इससे बेनिफिट मिलता हुआ हमें डायरेक्टली दिखेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कवरेज अमाउंट पर पर्सन अंडर द अपग्रेडेड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स रिसेंटली अनाउंस्ड बाय नितिन गडकरी जी? तो लिमिट क्या रहेगी उसकी? 1.5 लाख रुपए तक का यहाँ पे पर पर्सन का आपका यहाँ पे इलाज हो सकता है कैशलेस ट्रीटमेंट रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली लॉन्च किया किसान समृद्धि पोर्टल टू क्रिएट डिजिटल व्यापार नेटवर्क टू प्रमोट एफिशिएंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग? तो वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट, किस एडिशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी के द्वारा एट द नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स इन पूसा न्यू दिल्ली? तो कौन सा एडिशन रहेगा इस नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का? तो ये 8वां एडिशन रहेगा।
नेक्स्ट, वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया 5G यूज केस टेस्ट लैब फॉर सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया? झारखंड में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया डैश पोर्टल टू प्रोवाइड एक्सेस टू 10,000 होल जीनोम सैंपल्स फॉर रिसर्चर्स ग्लोबली एट द जीनोम इंडिया डाटा कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। तो इन्होंने लॉन्च किया इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। नेक्स्ट, इन जनवरी इंडिया एक मेंबर बन गया किस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का? तो इंडिया मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस टनल को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? सोनमर्ग में लोकेटेड इन द गैंडरबॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो किस टनल को इनॉग्रेट किया गया था? जेड मोर टनल को इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रपोजेस द रैशनलाइजेशन ऑफ ब्रॉडबैंड टैरिफ्स फॉर पब्लिक डाटा ऑफिसेज अंडर द PM वानी स्कीम इन जनवरी। तो ये 71st अमेंडमेंट एक्ट रहेगा। So students, next is our homework section. First, tell me recently who has been appointed as the chairperson of IWLF Athletes Commission. We just discussed this today. Second question, who has been appointed as the Chief Executive Officer of Oman India Joint Investment Fund. Third question, tell me recently who has received the knighthood for his services to cricket. Name that person and from which country he belongs to. Then fourth question, who has bagged the ICC Men's Player of the Month award for March 2025. Fifth question, recently tell me DRDO, they have released a long range glide bomb. What is the name of that bomb and it was tested from which aircraft? Tell me that also. So these are your 5 homework questions students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.